So good evening all of you. लास्ट हमने टॉपिक लिखा था प्री केशवानंद पोजीशन, ठीक है. इसमें एक पैराग्राफ लिखेंगे. विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, with the commencement of the constitution, the Indian judiciary primarily faced following two conflicts. First, fundamental rights versus DPSPs Second, amendment power of the parliament versus judicial review by the judiciary. Now look at the board. As we started our journey in 1950, immediately two major conflicts emerged. One was fundamental rights versus DPSP, which is more important. And the second was that the power to amend the constitution under Article 368 and the power of judicial review under Article 13, which is more powerful. Now see, we have Part 3 of the Indian Constitution. It has articles from Article 12 to 35. We have Part 4 of the Constitution. It has articles 36 to 51. And then we have Part 20 of the Indian Constitution. It has just one article, Article 368. अब ये जो Part 3 है, it is having fundamental rights. Part 4 is having DPSPs, and Part 20 is talking about the amendment power of the parliament. अब इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज हुआ, पहला जो FR वर्सेस DPSP का जो कॉन्फ्लिक्ट था, that was related to the reservations, and the second conflict was related to the fundamental rights. In Part 3, we had one article, that was Article 19(1)(f). It was existing previously, which was giving the fundamental right, the freedom to acquire, hold and dispose of property. That will be my freedom. And we had another article, Article 31, that was giving the fundamental right to property. So ये तो हुए fundamental rights. In DPSPs, we had Articles 39B and Article 39C. 39B was saying that the material resource of the country, और ये बार बार articles आएंगे, material resource of the country can be used for common good. And 39C was saying that the government will make such policy so that there will not be concentration of wealth. Okay? So there will not be concentration of wealth. A problem क्या है कि if you are doing the land reforms, you are taking property from somebody, giving it to somebody, and the moment you are taking the property, he will approach the Supreme Court or the High Court saying that his fundamental right is getting violated. There are two another articles which are very important. इसमें एक Article 13 है. Article 13 says simply that any law which violates fundamental right, to the extent of that violation, will be declared null and void.
यदि कोई कानून बनता है जिससे आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, दैट लॉ विल नॉट स्टैंड। आर्टिकल 13 ये कहता है। While here we have another article, Article 37, which says that DPSPs are not enforceable. They are not enforceable. And therefore, you'll find that fundamental rights enforceable hai, they are not enforceable. Now, the problem that emerged, इसमें जो हमने पहला, just write the name of first case, write the name of a case. State of Madras versus Champakam Dorairajan. State of Madras versus Champakam Dorairajan. 1951. 1951. Now, what happened in this case was that Champakam Dorairajan, she was a Brahmin, she was a woman from the Brahmin community, upper caste, and she was seeking admission. She was seeking admission in a medical college. She experienced that the seats are available, but she is not been given seat into the medical college because the Madras province, it was executing one order, Government Order 1927, which provided for the caste-based reservation. Caste-based reservation. Now she approached the courts. Pehle High Court gayi and then Supreme Court. She said that my fundamental rights are getting violated. तो सुप्रीम कोर्ट के सामने दो पक्ष है. One is Champakam Dorairajan. The other is State of Madras. Champakam Dorairajan is saying that my fundamental rights are getting violated. Which fundamental rights? She said Article 15 Clause 1, which says that there should not be discrimination on the basis of caste. She is being discriminated. Plus her fundamental rights under Article 29 Clause 2 is getting violated, which says that if there is any academic institution of public nature, then you cannot be denied admission just because of your caste. And she is being denied admission because of her caste. Now she approached the court. On the other hand, the Madras government said, the Madras state said that we are also following the constitution. By which provision you are following? उन्होंने कहा कि we are following Article 46. Article 46 says that state will make policies for the educational and economic interest for scheduled caste, scheduled tribe, and other weaker sections. So we are also doing what the constitution is saying. It was the first case challenging the concept of reservations. Now, it was not very tough for the judges then because they are going for the textual interpretation. They saw that ठीक है, इनका जो argument है, it is on the basis of fundamental rights. The arguments of Madras state is on the basis of DPSPs. And Article 12 says, Article 13 says that any law which violates fundamental right will be declared null and void. And Article 37 is saying that DPSPs are not enforceable. तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा जजेस को. They said that the position of Champakam Dorairajan is constitutionally correct. Is constitutionally correct. Both are important, but we cannot protect DPSPs by violating the fundamental rights. So it was decision in favor of Champakam Dorairajan. In fact, ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 था, it was working fine till 25th January 1950. But the moment the constitution is commencing, Article 15 Clause 1 is coming, and Article 15 is saying no discrimination on the basis of caste. And therefore, Champakam Dorairajan, she won this case. Dr. Ambedkar criticized this judgment. He said that Supreme Court is going for a very narrow conception of equality.
we should go for a substantive conception of equality. मतलब कि कभी कभी हम unequal करके भी equal करते हैं. In fact, many times you will see that you will have to treat people differently in order to treat them equally. जैसे हमने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कल, that people are treated differently so that they can be equal. So this judgment came and the government now face the problem कि यदि रिजर्वेशंस नहीं देंगे, then how can we promote social justice? Without reservation, how can social justice be done? और पैरेलली क्या हो रहा था, मैंने एग्जांपल आपको बताया था. इन स्टेट ऑफ बिहार, द लैंड रिफॉर्म एक्ट वाज पास. द लैंड रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड. Immediately this act was challenged in Patna High Court, and the High Court said that this law is not valid. Why? Because this law is violating Article 19(1)(f). It is violating Article 14, because Article 14 talks about right to equality. तो यदि सरकार जमीनें ले रही है तो सबकी ले ले. Why are you taking only of those who are having this much amount of land? So it is violating Article 14, it is violating Article 19(1)(f), and it is also violating Article 31. तीन rights को violate कर रहा है. And therefore this act is not valid. Now the problem is that if Land Reform Act will not be passed, then how can we fulfill the objective of economic justice? And we know कि preamble में जो first objective state का है, that is justice, social, economic and political. तो political justice तो हमने दे दिया, universal adult franchise. But Ambedkar has cautioned us that without socio-economic justice, political justice is good for nothing. It will not sustain. और जब हम social justice करने जा रहे हैं, reservation, the problem is coming there. When we are going to do economic justice, land reform, problem is coming there. And at least for Nehru, more than social justice, this agenda was his favorite. Nehru was inspired by the Soviet example, and he believed that in India, land reforms must be done. But what is happening? That constitution itself is now blocking the way. अब आप सोचो कि 1950 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, एंड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को वी आर फाइंडिंग इट एज अ ब्लॉकिंग वे फॉर इकोनॉमिक एंड द सोशल जस्टिस. एंड देयरफॉर नेहरू गवर्नमेंट डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट. तो पहले चंपकम दोराईराजन का लिख देंगे, राइट. इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मली उल्टा होता है, चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, या स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन, बिकॉज चंपकम दोराईराजन वॉन हर केस इन हाई कोर्ट ऑल्सो. तो जो केस जीत जाता है वो अपील में तो जाता नहीं है, देन स्टेट ऑफ मद्रास विल गो फॉर अपील, और जो भी अपील में पहले जाता है, नोमेनक्लेचर में आप देखेंगे कि उसका नाम पहले लिखा रहता है. तो दैट्स व्हाई स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन. ठीक है, राइट. This was the first case. This was the first case regarding reservations in India. Right. The seven-judge bench led by, who was the first Chief Justice of India? H.J. Kania, Harilal J. Kania. Led by Harilal J. Kania. Harilal J. Kania. Harilal J. Kania ruled in favor of Kania. Harilal J. Kania ruled in favor of the fundamental rights, The court clarified
that in case of any conflict, between FR and DPSPs, the former shall prevail. That means FR shall prevail. The former shall prevail. Right. The court went for a strict textual approach. कि आमतौर पे आप देखते हैं कि इनिशियली इन एवरी कंट्री कोर्ट्स गो फॉर टेक्सुअल अप्रोच. आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट गोइंग फॉर द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन. क्योंकि शुरुआत में, इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट द कोर्ट्स, वी ऑल्सो इनिशियली वी फॉलो द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली, है ना. जब भी आप कॉलेज गए होंगे पहले दिन तो टाइम से पहुंचे होंगे एकदम पहले, ठीक, एकदम टाइम से जा रहे हैं, अटेंडेंस को सीरियसली ले रहे हैं. फिर कुछ टाइम पता चला होगा कि ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, टीचर से बात कर लेंगे आप, ठीक है. एंड देन यू स्टार्ट गोइंग इनटू योर लिबर्टी. So initially every institution goes for the textual approach and after that we started taking our liberty. Okay. Now right, एक सबहेडिंग लिखो, response of government. ठीक है. Response of government. So now government is facing two problems. First, that they cannot implement the land reforms. Okay. Secondly, they cannot implement the reservations, and therefore in this way they will not be able to implement the social and economic justice, which is an objective given in the preamble. फिर नेहरू ने कहा कि लाओ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं. क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी ही तो चाहिए स्पेशल. नेहरू को किस चीज की कमी थी और नेहरू को कौन रोकने वाला था? एंड दिस इज वन रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिटिसाइज्ड कि 3 साल लगाया आपने इसको बनाने में, राइट, और पहले ही साल में आपको अमेंड करना पड़ा. In fact, during the lifetime of Nehru, 16 amendments were done during the lifetime of Nehru. And the first amendment was done in the very first year of the Republic itself. Now, various amendments were done through the first amendment. But for us, what is important is the 4 changes that were done. I'll make you write. पहला जो change था, that Article 15 में एक और clause जोड़ा गया, clause 4. पहले 15 में clause 3 तक होता था. 15 clause 3 said that there can be special provision for women and children. But now 15 clause 4 was added, which said that despite of the fact that anything is written in Article 15 or in Article 29, clause 2. अब इन दोनों आर्टिकल्स को एक्सेप्शन क्यों बनाया गया? बिकॉज चंपकम दोराईराजन इन्हीं 2 आर्टिकल्स को लेके कोर्ट गई थी. She fought her case on the basis of Article 15 clause 1 and 29 clause 2. And therefore, when you will see in 15 clause 4, I'll show you, exception has been made for these 2 articles. That irrespective of whatever is written in 15 clause 1 or 29 clause 2, there can be a special provision for scheduled caste, scheduled tribe, socially and educationally backward classes. And from this point, the reservation system starts. So 15 clause 4 was inserted. आगे हम देखेंगे that 15 clause 5 will be inserted by Dr. Manmohan Singh, 93rd amendment, or then 15 clause 6 will be inserted by Prime Minister Modi for getting EWS reservation through 103rd amendment. Next change जो हमारे लिए important है, that is Article 31A was inserted. अभी तक Article 31 तक था. Nehru introduced Article 31A, which is a long article, जिसका essence ये है कि if the government is acquiring your property under certain condition, you cannot challenge it on the basis of Article 13 for violating your fundamental rights given under 14,
19 and 31, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते. Another change which was done, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे. नेहरू एडेड 9th शेड्यूल. 9th schedule was added, and another article was added, that was 31B. और उसमें ये लिखाया गया that any law which is being placed in the 9th schedule cannot be challenged for violating the fundamental rights. Violating the fundamental rights. This was done for making reservation possible. These were done for making land reforms possible. अब ये articles दिखते कैसे? So first of all, Article 15 Clause 1, जिसके basis पे Champakam Dorairajan went to the Supreme Court. It says that state shall not discriminate on the basis of caste. She was being discriminated. Then 29 Clause 2 says that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on the basis of religion, race, caste, language or something. So basically caste के basis पे she was being discriminated. She went to the court. Now 15 clause 4 was added. अब 15 clause 4 क्या कहता है? Nothing in this article. Which article? Article 15 की बात हो रही है ना. Nothing in this article or in clause 2 of Article 29, जिसको लेके चंपकम दोराईराजन सुप्रीम कोर्ट गई थी, shall prevent the state from making any special provision for the advancement of socially and educationally backward classes, scheduled caste and scheduled tribe. अब लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक वर्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट में दिनों तक डिबेट चलते हैं. If you read this article, this clause, you will find that reservation is not a matter of right. You cannot claim reservation as a matter of right. Why? Because see, again read. It is saying that it shall not prevent the state from providing special provision. ये नहीं कह रहा है कि state shall give special provision. अंतर है. State shall give मतलब it is your right. Reservation is a right. But it is saying nothing shall prevent the state from giving. That means if state wants, then reservation can be given. And that's why Supreme Court in Mukesh Kumar case 2022 हम देखेंगे said that reservation cannot be claimed as a matter of right. It is just an enabling provision. तो ये है 15 clause 4. एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना दो एक्सप्रेशन से जनरली आर्टिकल स्टार्ट होते हैं. एक है नॉट विथ स्टैंडिंग. नॉट विथ स्टैंडिंग या फिर नथिंग. ठीक है. जब ये एक्सप्रेशन रहेगा, दैट मीन्स दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी पावरफुल. इट इज गोइंग टू बी पावरफुल बिकॉज ये कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हैपेंस, ये वाला चीज तो ऑलवेज बी इंप्लीमेंटेड. एक दो वैसे एग्जाम्पल आएंगे, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. So this was 15 clause 4 which was inserted. Then 31A was inserted. I said long article, no need to read, absolutely none. But जो है कि it is saying that if the state is acquiring your property under these conditions, you cannot go to the court under Article 13 for complaining that your fundamental rights under 14, 19, पहले 31 भी हुआ करता था. But you know that 44th amendment say Article 31 has been removed. Now right to property is under Article 300A. So initially it was 31 also, but अभी 14 और 19 ही आपको दिखेगा. So this was 31A which was inserted. Then 31B was inserted. 31B said that without prejudice to the generality of the provision contained in 31A, none of the acts or regulations specified in 9th schedule shall be deemed to be void even if it is inconsistent with the fundamental right. This part means fundamental right or any judgments or any judgments. That means it is giving you the provision. और उसके बाद नेहरू गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बताया that make the Land Reforms Act inform us. Why? Because land reform acts can be made only by states. Land is a subject in state list.
But if you have to put in the 9th schedule, it requires amendment. And amendment can be done only by the union government, that is parliament. और ये पूरा process start हुआ that states are bringing the land reform acts, they are informing the union is putting in the 9th schedule, and after that the judiciary is not able to do anything. मैंने बताया कि the first land reform act which was passed, that was of Bihar land reform. तो पहला आप देखेंगे कि 9th schedule में अभी भी आप देखेंगे पहला एक्ट जो है that is the Bihar land reform act of 1950, जिसको कि जुडिशरी ने void डिक्लेयर कर दिया, उसको रीइनैक्ट किया गया and तुरंत it was put in the 9th schedule. Now, the moment this will happen, it will create problem for the property owners. अब रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन साइलेंट हो गया, that is not be challenged very much, वो हम देखेंगे फिर इंदिरा साहनी में आएगा. But now this land reform वाला जो क्वेश्चन है, that becomes a hot question, क्योंकि वही मैकियावेली वाली बात है कि one can forget the death of the father but not the patrimony. So nobody will like and that also in agricultural society like India, wherein everything depends upon what? The ownership of the land. People will not like the land to go that easily. The response of the government may write first amendment. First amendment. ठीक है, इसमें पॉइंट्स लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 15 clause 4, Article 15 clause 4 was added providing for special provisions for scheduled castes, scheduled tribes, socially and educationally backward classes. Socially and educationally backward classes. Backward classes, SEBCs. Next point, right? Article 31 capital A, 31A was inserted which provided that the acquisition of property under certain circumstances cannot be challenged under Article 13 for violating fundamental rights under 14, 19 and 31. 14, 19 and 31. अब देखो आर्टिकल जो 13 है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है. बेसिकली इसमें 13 clause 1 ये कहता है कि any law which has been existing, if it is going against fundamental right, to that extent it will be declared invalid. 13 clause 2 says law which will come into existence from now, to the extent it will go against fundamental right, will be declared null and void. Or 13 clause 3 defines what the law is. ये तो बताना पड़ेगा ना. तो 13 clause 1, all the laws in the India immediately before the commencement, in so far as they are inconsistent. ऐसा हो सकता है कि there are 10 sections in the law, only 2 sections are against fundamental rights, तो केवल 2 sections will be declared to that extent as void.
And 13 clause 2 says that states shall not make any law. That means अब से जो law बनेंगे which will be in contravention to the fundamental right. This is what Article 13 is saying. Next point, right? Ninth schedule was added. Third point है ये. Ninth schedule was added. Third point, huh? Ninth schedule was added. Right. Fourth point. 31B was inserted. 31B, capital B, was inserted, which provided that any law placed in the ninth schedule cannot be challenged for violating fundamental rights or any judgment. ठीक है. Again, Article 37 मैंने बताया कि जो हमने डिस्कस किया. Article 37 says that DPSPs are not enforceable, but it is fundamental in the governance of the country. Article 39B जिसका हमने जिक्र किया, मद्रास गवर्नमेंट ये आएगा लैंड रिफॉर्म्स में. 39B saying that the material resource of the country should be used for common good. केवल दो शब्द आपको याद रखना है, material resource, common good, उससे ज्यादा नहीं. And 39C that the economic system should be such that it should not result into concentration of wealth. Then Article 46 जिसको की बेसिस बना के मद्रास गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया that the state will make policies for the educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections. Okay. And then we have 360. Now write Shankari Prasad case. Shankari Prasad versus Union of India 1951. Shankari Prasad versus Union of India. Somebody is asking how all these articles are going to be remembered. अभी तो आर्टिकल्स आने कहाँ स्टार्ट हुए हैं, अभी तो जस्ट 2-3 आए. ठीक है, मैंने बताया कि दिस चैप्टर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, बट अगेन द क्वालिटी ऑफ द आंसर विल डाइल्यूट, है ना. एवरीबडी नोज दैट इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स है, ठीक है, एवरीबडी नोज, बट यू एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि 39BC से ही आता है. ठीक है, so these are the minimum articles that we will have to remember, और ये with writing with revision ये automatically याद हो जाता है. ठीक है, difference between OBCs and SEBCs, technical word is socially and educationally backward classes only. OBCs, other backward castes, ये जो हम बोलचाल में यूज करते हैं, but they are same in essence. Can we just write Shankari Prasad case? बिल्कुल लिख सकते हैं. Now what is happening is that states are making the land reform acts, और इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को यूनियन गवर्नमेंट 9th शेड्यूल में प्लेस कर दे रही है. इफेक्टिवली अभी भी लोगों की जमीनें तो जा रही हैं, प्रॉपर्टीज गुड, पीपल विल कम टू द कोर्ट. सो इन द सुप्रीम कोर्ट देयर विल बी टू साइड्स. वन, द प्रॉपर्टी ओनर्स जिनकी जमीनें जा रही हैं, other the state which is responsible for taking the land of the people. Now property owners will say that our fundamental rights are getting violated. कौन से fundamental rights? 14, 19, 1F and 31. So our fundamental rights are getting violated. But when they will come to the court, court ये कहेगा, that means the state will argue that kindly look at 31B. 31B is saying that any law which has been placed in the 9th schedule cannot be challenged for violating fundamental rights or even any judgments. So now the property owners will realize कि अब problem जो है ना,
A problem is in the first amendment. Now the villain for the property owners is what? 31B and 9th schedule. Now the villain is 31B and 9th schedule. Because previously the villain was 39B and C. उसको तो डील कर ले रहे कि जब बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, देन 39B and C के बेसिस पे गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया, इसको तो डील कर लिया. वाई? बिकॉज 39B and C दे वर नॉट enforceable. But now the government is not arguing on the basis of 39B and C. Now the government is saying 31B and 9th schedule. मान के चलो कि आई एम द प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है, कुछ 50 एकर्स मेरी जमीन है जो कि गवर्नमेंट ने ले ली है, 50 एकर्स. नाउ दिस action has been on the basis of a land reform act which has been passed. I will challenge this land reform act, but the moment judiciary will try to touch it, judiciary will find कि ये तो 9th schedule में, or judiciary cannot do anything which has been put in the 9th schedule, and therefore judiciary says sorry, we cannot do anything about it. अब प्रॉपर्टी ओनर्स जिनकी जमीनें जा रही हैं ऐसे तो बैठेंगे नहीं. अब उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि आखिर ये 9th शेड्यूल आया कहां से. फर्स्ट अमेंडमेंट्स. 9th शेड्यूल पहले नहीं था ना, इट केम थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट. सो नाउ दे आर टारगेटिंग फर्स्ट अमेंडमेंट. क्यों ना हम इसी को चैलेंज कर देते हैं, बिकॉज इफ फर्स्ट अमेंडमेंट विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड, देन 9th शेड्यूल विल इटसेल्फ बी इनवैलिड, और फिर उसके बाद तो फिर we can easily defeat 39B and C. So now the problem is not this, the problem is the first amendment. और उन्होंने कहा the property owners, they appeal to the Supreme Court that kindly declare the first amendment as constitutionally invalid. Supreme Court ने पूछा वो किस basis पे भाई? They said Article 13. Article 13 says that any law which violates fundamental rights will be declared invalid. तो amendment भी क्या कर रहा है? It is taking away our fundamental rights. तो kindly declare it as invalid. But the government, the opposite side is saying कि let us look into Article 13 कि law का मतलब है क्या. So when you are looking in Article 13, this is Article 13, Clause 1 हमने पढ़ा, Clause 2 पढ़ा. Now look at Clause 3. It says law includes ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, or the uses having Indian territory. Can you see the word amendment mentioned here? Can you see the word amendment? And therefore the state said that law does not mean amendment. Law does not mean amendment. इसका मतलब है कि आर्टिकल 13 की शक्तियां अमेंडमेंट पे काम नहीं करेंगी. Try to understand कि आर्टिकल 13 ये कहता है एनी लॉ विच इज टेकिंग फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड. उसके लिए आप बताइए व्हाट इज लॉ. तो लॉ इज ऑल दीज थिंग्स बट अमेंडमेंट इज नॉट मेंशन्ड. तो स्टेट ने कहा कि लॉ में अमेंडमेंट नहीं है, हमने तो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट लिया है ना, एंड देयरफॉर दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड. अगेन प्रॉपर्टी ओनर्स इतनी आसानी से जमीन नहीं जाने देंगे. दे सेड कि फाइन, द वर्ड लॉ इज नॉट रिटन हियर, बट काइंडली सी दैट आर्टिकल 13 क्लॉज 3 गिव्स इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ लॉ, नॉट द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. यहां पे आप लिखो, देखो क्या हुआ, लॉ इंक्लूड्स. अब यदि ये होता लॉ इज दिस 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 दिस, इसका मतलब और कुछ ऐड नहीं हो सकता था. बट इट सेज लॉ इंक्लूड्स दिस 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 दिस, दैट मींस देयर कैन बी अनदर वर्ड व्हिच कैन बी एडेड, दैट कैन बी अमेंडमेंट आल्सो. मतलब इसको ऐसे समझो कि यदि मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स आर A, B, C, D, that means E cannot be a student. But when I say students include
A, B, C, D, that means I can even include E into the definition of student. अब सुप्रीम कोर्ट बताए कि whether the word amendment can be included here or. So everything boiled down to one question. सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि आप बताइए कि in Article 13 Clause 2, which gives the open-ended definition of law, inclusive definition, can we also include the word amendment or not? If yes, तब तो प्रॉपर्टी ओनर्स जीत गए, क्योंकि इफ लॉ अमेंडमेंट इज अ लॉ, अमेंडमेंट को भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने के लिए हटा दिया जाएगा. बट इफ लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट, तब सरकार जीत गई. इसका मतलब ये होगा कि यू कैन नॉट टेक प्रॉपर्टी बाय मेकिंग लॉ, बट यू कैन टेक प्रॉपर्टी बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. So this is how it progressed. You are striking at the First Amendment and the judiciary was asked. Now this is the time of 1951. Judiciary said that law does not include amendment. Law does not include amendment. It means that your fundamental rights can be taken away by amending the Constitution. Your fundamental rights can be taken by amending the Constitution. It cannot be taken away by making law. ये आपका fundamental right नहीं ले सकता, but amendment can take away the fundamental right. और judiciary ने कहा because this is the result of ordinary majority, simple majority, and this is the result of special majority, special majority. बट द क्वेश्चन इज कि क्या स्पेशल मेजॉरिटी से भी ये चीज होनी चाहिए? क्योंकि वी फॉलो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, 36.3% वोट शेयर से बनी, 36%. यानी इफेक्टिवली यदि सभी पीजे 240 मेंबर्स भी वोट करते हैं इन फेवर, या फिर लास्ट टाइम भी 303 मेंबर्स आए थे, द वोटिंग परसेंटेज वो 37%. 37% वोटेड इन फेवर ऑफ बीजेपी, रेस्ट डिड नॉट वोट इन फेवर ऑफ बीजेपी. So if all the 303 members are also voting for that, that means 37% of the India is saying ki amend. Rest 63% is not saying ki it can be amend. तो ये आगे चल के केशवानंद भारती में this particular argument will come. But यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा that law does not mean amendment. That means government amendment करे, fundamental rights को restrict करे, we will keep quiet. We will keep quiet. Why judiciary gave this kind of judgment? इसको समझने के लिए आप तब के पॉलिटिक्स में एंटर करो. टाइम 1951 का है. It is the time of Congress system. It is the time of Nehruvian hegemony, and everybody knew that Nehru is supporting land reforms. Plus, this is the time of politics of trust. People are trusting Nehru, they are trusting their representatives. अभी के टाइम में यदि मान के चलो लीडर्स के खिलाफ कोई जजमेंट भी आता है तो लोग बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगता है, खुशी होते हैं कि अच्छा हुआ इनका. But that is the time when people are trusting their representatives. This is also the time when Indian national movement has concluded in 1947. संविधान बना 1950 में, and what was promised in the Indian national movement is being executed through land reforms. Judiciary is very much aware of the fact that out of the two organs, basically India में legislature and executive one and the same thing. Second is judiciary. Which do you think is more elitist? Judiciary elitist. ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, grassroots. They have the trust of the people. These are elitist. Judges अभी भी they are elitist. Then also they were elitist. In fact, this is being considered as a legacy of the British rule. और सोचो कि this organ is trying to do land reforms, और यदि जुडिशरी बीच में बहुत हिंड्रेंस करेगी, कितना टाइम लगेगा लोगों को घुस के जजेस को पीट देने में? लोगों को तो यही लगेगा ना कि भाई नेहरू जी और बाकी लोग जो हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट लैंड फॉर अस, लैंड रिफॉर्म्स कराना चाह रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं. एंड दीज एलीट जजेस, दे आर फेवरिंग हूम? प्रॉपर्टी ओनर्स. वो थोड़ी समझे कि ये तो फंडामेंटल राइट में ही लिखा हुआ है.
वो तो यही समझेंगे ना कि जजेस आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल. So it will basically become the conflict between 1% and 99%. And 99% लोगों को लगेगा कि judges are favoring these 1%. अभी तो फिर भी you will find कि bureaucracy में या फिर even in judgeship you will find कि there are people from the normal background. Back then तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि any person from the normal background. They were all elitist. And therefore judiciary kept quiet. Judiciary said it is not the time to confront the executives. और जुडिशरी ने वही कहा जो कि नेहरू चाहते थे, जो सरकार चाहती थी. द जुडिशरी गेव अ वेरी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दैट लॉ डज नॉट मीन अमेंडमेंट. दैट मीन्स व्हेन यू विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन डू नथिंग. एब्सोल्युटली वी कैन डू नथिंग. वी विल कीप क्वाइट. यही जुडिशरी 1967 में आगे हम देखेंगे गोलकनाथ केस में कंप्लीटली ऑपोजिट जजमेंट. ठीक है, इसको लिखेंगे. शंकरी प्रसाद के सामने लिखा. हाँ. Which one? Personal law in what sense you're saying? But the UC in context of UCC. It is protected. It is protected. अब उस पे there we cannot say that in clear terms yes or no. That will depend from case to case. For example, let us say when triple talaq judgment came, before that also the practice of triple talaq was derogatory to women, but it was continuing. Why it was continuing? It was being protected under the personal law. But a time came when Supreme Court said it struck it down. So in general, it is protected under the personal law. Okay, Article 13 may not apply on that, but it will depend from case to case, because there are many personal laws which does not follow the fundamental rights. In fact, property rights for girls, okay, you'll find that it was not in comparison to the male child, but it was being protected under the personal law, because India does not have uniform civil code. Chalo, right. क्या लिखा अभी? शंकरी प्रसाद. It was the first case. It was the first case in which the amending power of the parliament was challenged. That is, the first amendment was questioned. First amendment was questioned. Next paragraph. The Supreme Court upheld the First Amendment. Upheld the First Amendment, declaring that the term law given in Article 13 does not include constitutional amendment. Constitutional amendment. Next paragraph, right? Similar position was maintained in the Sajjan Singh versus State of Rajasthan case. In Sajjan Singh versus State of Rajasthan, 1965. 1965. So basically, अब एक सिलसिला start हो गया that land reforms laws are being passed. The parliament is amending the constitution to put it into the 9th schedule. And when people are going to the court is saying कि यदि ये law होता ना तो हम कुछ करते. But ये तो constitution amendment है.
we cannot do anything in this particular matter. Hands off completely, we cannot. इनफैक्ट एक केस का जिक्र होता है, दैट इज द बेला बनर्जी केस ऑफ 1954. अब बेला बनर्जी जो केस है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि इन वेस्ट बंगाल एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया गया. यू नो दैट लैंड रिफॉर्म्स वर रिलेटिवली सक्सेसफुल इन वेस्ट बंगाल, केरला. Now this act, this land reform act of West Bengal provided that your land will be taken today, your property will be taken today, and you will be compensated with a price from the past date. मतलब सरकार मेरी जमीन 2026 में ले रही है और मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है मे बी 2006 के हिसाब से. कानून में लिखा था, अब तो कानून है ये, that government will take your property today and you will be compensated at a rate. और हमें पता है कि सर्कल रेट ऐसे भी कम ही रहता है, ठीक है. जो सर्कल रेट रहता है, जो रियल रेट रहता है, उसमें बहुत अंतर होता है, ठीक है. तो एक तो उस सरकारी रेट से कंपनसेशन होगा, that will be also of the past date. Now this goes against the natural justice. कंपनसेशन शब्द का ही मतलब है that you will be given something of the same proportion, isn't it? कंपनसेशन का तो ये मतलब है ना कि आपकी मान के चलिए कि 50 लाख की गाड़ी कोई लेके आपको 50,000 का बाइक दे दे, वो कंपनसेशन थोड़ी हुआ. इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट. जुडिशरी सेट ये तो सही नहीं हुआ. दिस लॉ इज गोइंग अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस. अ पर्सन हैज टू बी कंपनसेटेड विद प्रोपोर्शनेट अमाउंट. नेहरू जी ने कहा निकालो कॉन्स्टिट्यूशन. And in Article 31 a new clause was added that if you are being compensated, if you are being given compensation for exchange of any property that you have given to the state, you cannot go to the court saying that compensation is not proportionate. नेहरू जी ने किया आर्टिकल 30, अभी आर्टिकल 31 नहीं है, अदरवाइज 31 आई थिंक क्लॉज 4 था जिसमें इंसर्ट कर दिया that you cannot go to the court saying that the compensation is not appropriate. ठीक है. सोशलिस्ट रिजीम था, लैंड रिफॉर्म्स, वो भी वेस्ट बंगाल की बात हो रही है. and this was the particular thing. This kept on going till 1967. ठीक है. अब एक केस का नाम लिखो, गोलकनाथ केस. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967. Golaknath versus State of Punjab 1967. Now first understand the politics of 1967. मैंने बताया कि ये साल जो है इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है. So it is often the timing which matters. Questions are not correct or not correct. The timing makes the question correct or not. 1967 से जस्ट पहले, हमने पहले भी जिक्र किया है, 1962 इंडिया चाइना वॉर, नेहरूज हेजेमनी को एक बड़ा इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट लगेगा. पीपल रियलाइज दैट इवन नेहरू कैन गो रॉन्ग. 1964 में नेहरू passes away and that also in a manner जो कि it was not expected. ऐसा नहीं था कि old age problem था, नहीं, it was not expected. And then 1967, इससे पहले the prime ministers that India saw, the Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, they are not as charismatic as Nehru was. 1967 इलेक्शंस होते हैं. 1967 के फेब में रिजल्ट आता है एंड कांग्रेस गेट्स 283 सीट्स व्हिच वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस टिल देन. पहली बार कांग्रेस को 3/4. दैट मींस इट वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस टिल देन. नाउ नो इंस्टीट्यूशन कैन सेंस द वीकनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव एज जुडिशरी. और जुडिशरी ने कहा कि अब अपना टाइम आ गया, अब वो समय खत्म हुआ, डर के नहीं जीना है, अब आ गया अपना. और जुडिशरी को मिला मौका गोलकनाथ केस में. नाउ देयर वर 2 brothers फ्रॉम पंजाब, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ. नाम थोड़ा फैंसी है इनका, ठीक है. हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ अमीर थे, बहुत अमीर थे.
टोटल इनके पास 500 एकड़ जमीन थी. And the Punjab government brought a law, the Punjab Security of Lands Tenure Act 1953, which was put in the 9th schedule through 17th amendment. Same question जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का हुआ था, that इस एक्ट में ये कहा गया that one person, मतलब one family can keep maximum of 30 acres of land. So 500 acres total. एक भाई के पास 30 एकड़ रहेगा, दूसरे के पास 30 एकड़, 60 एकर्स हो सकता है, और 40 एकड़ बचा लेंगे अपने हाउस हेल्प उनको ट्रांसफर करके. बट मैक्सिमम that can save is 100 acres. Rest 400 acre will go to the government. Good thing about Golaknath brothers was कि टाइम चेंज हो गया था अभी, and they approached the Supreme Court, same question, that fundamental rights is getting violated. उन्होंने क्वेश्चन किया 17th amendment को, जिससे चलते that law was placed in the 9th schedule. Good thing was that then Chief Justice was Mr. Justice K. Subbarao. He was known for his liberal philosophy. जज की philosophy बड़ा मैटर करती है. इससे पहले जो जजेस थे they were of socialist philosophy. Now this judge is of liberal philosophy. Liberal philosophy होगी, then they will be supporting the property rights. And in this particular case, when the Supreme Court met, the same question was there. Supreme Court ने judicial activism follow किया. Judicial activism का मतलब होता है कि when one question has been asked from by the judiciary, judiciary आगे बढ़ के other questions को भी include कर लेती है. यहाँ पे बस ये पूछा गया था कि whether the 17th amendment is constitutional or not. इन्होंने पहले वाले amendment को भी they took and they started looking into the matter. This time, Supreme Court is giving completely opposite observation. First thing they said that वो जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया था उसमें हमने लिखा था पहला कॉन्फ्लिक्ट एफआर वर्सेस डीपीएसपी. शंकरी प्रसाद के पास दूसरा कॉन्फ्लिक्ट भी वहां आ चुका है. सेकेंड, दैट वाज जुडिशियल रिव्यू वर्सेस द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट. टिल नाउ देखा जाए तो अभी तक डीपीएसपीज आर appearing to be more important than fundamental rights, and the amendment power was appearing to be more powerful than the judicial review. Abhi tak Golaknath case. Golaknath will completely reverse this. They would say that first thing कि Article 13 जो है, Article 13 में the term law includes amendment also. अभी तक बोल रहे थे it does not include amendment. So if includes amendment, that means Article 13 can even strike down constitutional amendments. Second thing, Article 368, which is providing the amendment power, they said that it is just giving you the process and not the power to amend the constitution. Third, if fundamental rights needs to be amended, तो पूछा गया कि क्या इसका मतलब है fundamental right कभी amend हो ही नहीं पाएगा. The Supreme Court said if you want to amend the fundamental rights, you will have to call Constituent Assembly again. जस्टिस सुब्बाराव ने कहा कि कुछ तो कारण है कि fundamental rights को fundamental कहा जाता है, या आप ऐसे ही इसको amend कर दोगे, then how can fundamental rights be fundamental? So they have been given by the Constituent Assembly. If they needs to be amended, call Constituent Assembly again. Fourth, forget about special majority. Even if there is 100% majority in both the houses of the parliament, yet you cannot touch fundamental rights. And this completely changed the scenario. ये जो equation था, now fundamental rights will become much more powerful than DPSPs, and judicial review will be much more powerful than the amendment. तो वो बोलता है ना कि जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिया, ठीक है, वक्त बदल दिया, वही से किया जुडिशियल. Immediately everything was changed. 1967, the significance of this case. In fact, if you see the wordings of the judgment, the Supreme Court is saying that the importance attached to the fundamental freedom is so transcendental that a bill enacted by a unanimous vote, matlab 100% of all the members of both the houses, is ineffective to derogate from its guaranteed exercise. यानी 100% वोटिंग हो
फिर भी आप फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते. एंड दिस जजमेंट अगेन पोस्ट नेहरूवियन टाइम, एंड दिस शोज इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द केसेस जहां पे इनफैक्ट this was the first time when the word basic structure was used verbally. It did not come into the written judgment, but पहली बार basic structure शब्द का यूज हुआ. बिकॉज इससे जस्ट पहले 65 के आसपास 60s में पाकिस्तान में एक मिलिट्री डिक्टेटर हुए. ही वाज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनीथिंग, एंड द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हैड सेड कि देयर विल बी सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड. तो आप उस समय मान के चलो कि उस समय कुछ बहुत डिस्कस मैटर रहा होगा. तो हियर आल्सो इट वाज सेड दैट यू कैन नॉट अमेंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इनफैक्ट दिस जजमेंट, अभी क्या होता है ना कि मैंने बताया कि जब भी सच केसेस कम बिफोर द कोर्ट, हाई स्टेक केसेस आते हैं, तो एक एक शब्द पे बहुत ज्यादा बहस की जाती है. अब इसमें जो वकील थे प्रॉपर्टी ओनर्स के टाइप से, ही वाज नानी पालकीवाला. नानी पालकीवाला कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट लॉयर दैट इंडिया हैज सीन. ऐसा वकील जो कि कोर्ट में आता था तो जज अपनी तैयारी करके आता कि आज नानी पालकीवाला आने वाले हैं तो हमारी तैयारी जो है सही है. In fact, the man single-handedly stopped the government and the Supreme Court from touching the basic structure doctrine. Otherwise, Indira Gandhi basic structure doctrine कब का उखाड़ के फेंक दी होती. नानी पालकीवाला, नानी पालकीवाला, in fact, when he was arguing in this case, तो it was a high stake case and particularly Article 368 के एक aspect पे बहुत ज्यादा वो emphasize कर रहे थे. Article 368 का जो clause 2 है ये, he was emphasizing on this word that the constitution says that after following all these processes the constitution shall stand amended. He was emphasizing on this point very emphatically, and he was trying to convey the idea to the judge कि constitution makers का ये कहना था कि you can amend the constitution, fine, but at the end the constitution should stand amended. That means the basic structure of the constitution should not be changed, क्योंकि basic structure change करेंगे then it will. So the constitution shall stand amended. अब ये argument जब बार बार सुना केएल मिश्रा ने, केएल मिश्रा was the advocate from the government side, ठीक है, कि he is emphasizing on the word stand, so he said कि फिर क्या बोलता constitution, क्या यहाँ पे लिखा होता sit after the amendment, यहाँ पे sit भी तो नहीं लिखा जा सकता था. And he said that why are you emphasizing on this unnecessarily? और उन्होंने कहा कि हमें भी अंग्रेजी की थोड़ी जानकारी है, ठीक है, don't play on these words. और केएल मिश्रा की अंग्रेजी की जानकारी इतनी थी कि जो एग्जाम आप अभी दे रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी, इसमें ऐसे का पेपर होता है कितने मार्क्स का, 250 का, ठीक है. 250 में 150 आ जाए तो आदमी खुश हो जाता है, हालांकि उतना बहुत मुश्किल है लाना, बट 250 में 150 आ जाए तो फिर क्या ही पूछना. केएल मिश्रा ने भी एग्जाम दिया था सिविल सर्विसेज का, और उनके जो मार्क्स थे इन दिस एग्जाम दैट वाज 150 आउट ऑफ 150. ऐसे पेपर उस टाइम 150 का होता था, एंड दैट वाज 150 आउट ऑफ 150. सो मच सो दैट द प्रोफेसर, द इंग्लिश प्रोफेसर हु चेक्ड हिज कॉपी, और वो भी इंडियन को मार्क्स दे रहा है कौन, इंग्लिश प्रोफेसर. आपका वाला तो इंडियन ही चेक करता होगा ना मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. इंडियन की कॉपी कौन चेक कर रहा है, इंग्लिश प्रोफेसर. He wrote a letter to the HOD of the department in Allahabad University, and what he said, he scored of course 1920 ICS 1926 में दिया, 150 out of 150. He wrote a letter to the department, to the head of the department of the English in Allahabad University, and he said that it is the Englishman who had conquered India, but it is only K.L. Mishra who conquered English. ठीक है, अब सोचो कि 1926 में किसी फिरंगी से ये लिखवा लेना, ठीक है, जो कि कितना इथनोसेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग. तो ही सेड कि हमारी भी, ऑल्दो इनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ क्योंकि ये गांधी के साथ पार्टिसिपेट कर चुके थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो दैट वाज द बिगेस्ट सिन to be done, and therefore he could not enter into the ICS back then. So anyway, this judgment came, and this Golaknath judgment, it marks the major milestone in the FR versus DPSP debate. इसको लिखेंगे, right? अभी क्या लिखा, Golaknath was, right? In this case, an 11 judge bench through 6:5 majority, gave following observations.
gave following observations. इसको पॉइंट में लिखेंगे. Right. Shankari, Prasad and Sajjan Singh case. Shankari, Prasad and Sajjan Singh verdicts. Shankari, Prasad and Sajjan Singh verdicts were overruled. Next point. Next point. The term law in Article 13 includes amendment which is subject to judicial review. ठीक है. ब्रैकेट में लिख लो आर्टिकल 13 ग्रेटर देन 368 अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. आर्टिकल 13 किस चीज से रिलेटेड है? जुडिशियल रिव्यू. आर्टिकल 13 ग्रेटर देन आर्टिकल 368. नेक्स्ट पॉइंट, राइट. Amendment means modification. Not destruction. Next point. Fundamental rights have the position of permanence. It is permanent. Has a position of permanence which cannot be amended even with a unanimous majority. Next point. For amending the fundamental rights, Constituent Assembly has to be called. Constituent Assembly has to be called. एक last observation लिखो. Article 368 gives the procedure and not the power to amend the Constitution. For example, if in that time EWS should have been used in place, Hmm. वो हो सकता था क्या? क्योंकि नहीं. ये तो लिखा है थर्ड में कि मॉडिफिकेशन कर सकते, डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. नहीं, ईडब्ल्यूएस तो 1992 में मना कर दिया था, तब तो दूसरी बात है, नहीं हो सकता था. और ठीक अगर है. कोई और अमेंडमेंट करना हो, जैसे सब क्लॉज कोई ऐड करना हो, वो भी नहीं. नहीं, सी अमेंडमेंट के बाद ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया जा सकता था. ठीक है. बट सी व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन नॉट, इमेजिनेशन में नहीं. यदि हम जाते हैं फैक्ट्स में, then we know that Supreme Court 9-judge bench in the Indira Gandhi case in 1992 declared EWS reservation as constitutionally invalid. तो फैक्ट तो ये कहता है. ठीक है. चलो. Now अब ये जो लास्ट लाइन आपने लिखा ना कि आर्टिकल 368 gives the procedure not the power to amend the constitution, इसका बहुत मतलब नहीं है. जस्ट दैट कि 368 का जो हेडिंग था उसमें इनिशियली इट वाज जस्ट रिटन प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब एक पैराग्राफ जस्ट लिख दो. Therefore, the Golaknath verdict clearly established the power of judicial review over
amendments over amendments. Now write another case. In fact, interesting part ये है कि फिर भी गोलकनाथ ब्रदर्स को उनकी जमीनें नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने एक डॉक्ट्रीन, अमेरिकन डॉक्ट्रीन यूज किया जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, कि वॉट एवर वी आर सेइंग विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बिकॉज कोर्ट ने कहा कि यदि हम रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करते हैं तो कितनी लोगों की जमीनें लेके किसी को बांट दी गई हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल कि वापस अब वो जमीन देंगे, वापस आप जाओगे तो नहीं देंगे, तो इट विल रिजल्ट इनटू chaos एंड एनार्की, एंड देयरफॉर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी एप्लीकेबल। इनफैक्ट केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कहा कि the petitioners, that means the Golaknath brothers, left the court with the consolation that the posterity will enjoy the fruits of the walnut tree planted by them। मतलब हमें नहीं मिल रहा है, हमारे बाद वालों को। मतलब वही बात हुआ कि प्रोटेस्ट आपने किया कि सीसेट हटाओ और पेपर आसान करो और फायदा मिलेगा अगले अटेम्प्ट वालों को, तो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। But in this case, clearly the court said why? Because it was not possible. It was not, see, this was related to the land ownership, right? It is not just keep, it was not related to some admissions and all, right? So, of course, retrospectively it can be done. But for this case, the court clearly said that the prospective overruling will be used. The doctrine of prospective overruling will be used. Now, right, another case, R.C. Cooper versus Union of India. R.C. Cooper versus Union of India. Okay. Now, again, come to this time, जो कि 1967 से 1971 का टाइम है, बेसिकली आफ्टर द गोलकनाथ केस। पॉलिटिक्स में जाते हैं। मिसेस गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर, but she is the prime minister who is being called as Gongi Gudiya. She is absolutely powerless. शायद मैंने बताया होगा कि आफ्टर नेहरू, मोरारजी देसाई was supposed to be the next prime minister if you look into the experience in the administration. But problem with Morarji Desai was that he was not controllable. And therefore, Lal Bahadur Shastri को बनाया गया, who was very honest, participated in the national movement और पार्टी से कंट्रोल में आ जाते थे. After Lal Bahadur Shastri, again Morarji Desai was the front runner. Yet he was not made. Why? The same problem. He was not controllable. Mrs. Gandhi was made the prime minister because she belonged to that family. She had some limited administrative experience because she was the information and broadcasting minister under Nehru. And third, she was controllable. उनको बना दिया गया प्रधानमंत्री. Now Indira Gandhi knows this fact very well कि ऐसे तो नहीं चलने वाला है. You cannot, मतलब नेहरू जी की बेटी को कैसे कंट्रोल कर सकते? But she also knows that अभी structurally she is weak. पार्टी में she is the prime minister, but पार्टी में सुना किसका जा रहा है? के कामराज and group. So she cannot rebel because she will be losing this position also. And then she starts preparing the ground for her politics. Democracy में आपको successful होना है, then go closer to the people. Make your dream their dream. इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, लोगों ने कहा, गरीबों ने कहा हाँ हटाओ हटाओ, हम भी तो यही चाहते. ट्रंप ने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बना रहा है ग्रेट. किसी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, आ गए. Anyway, now Indira Gandhi started following strictly socialist policies. मैंने बताया लोगों को सोशलिज्म पसंद है, कैपिटलिज्म नहीं. इंडियन पॉलिटिक्स अराउंड सोशलिज्म. ठीक है. She started taking steps जिससे कि लोगों को अच्छा लगे. One such step was the bank nationalization. ठीक है. Now she said कि the banks are having lot of money.
but these are private banks and a poor person will be hesitating in going to the private bank. एक गरीब किसान को दो ऑप्शन रहे, एक ग्रामीण बैंक में जाके लोन लेने का और दूसरा मान के चलो HSBC सिटी बैंक में. Of course वो ग्रामीण बैंक में जाएगा. She said that lot of money is there. I would want to nationalize these banks so that this money can be used for the. But this decision was challenged. क्यों challenge किया गया? Government ने क्या किया कि the 14 top banks, they were nationalized. Okay. One of the persons, Mr. R.C. Cooper, who was the director of Central Bank of India and he had stakes in Bank of Baroda, he challenged this decision of government. Supreme Court के सामने दो पक्ष हैं. One is Mr. R.C. Cooper, जो कि banks को represent कर रहे हैं. And then we have the state. Now the arguments that R.C. Cooper raised was कि इसमें जो ये जो law लाया गया था, first of all, it was brought through ordinance. There's one article in the Indian Constitution, Article 123, which says that when the House is not in session and if there's an urgent requirement, you can get a law through precedent जिसको बाद में pass कराया जा सकता है. So this was brought through an ordinance. Second, the provision was that government is going to nationalize the banks. That means उस banks में जो पैसे हैं, जो stakes हैं, उनको government ले लेगी. Government will provide compensation. Of course, if you are taking something, compensation. अब इसमें compensation में problem क्या था कि government said कि either you take the compensation which has been fixed by the government, or if you are not happy with the compensation, then we will set a tribunal. You can go to that tribunal. Tribunal एक तरीके का court system होता है. You can go to that tribunal and whatever tribunal will say, we will give you that amount of money, but only after 10 years. 10 साल के बाद. Basically इसका मतलब है कि चुपचाप जितना पैसा दिया जा रहा है, लो और जाओ. सोचो कोई बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? द कैपिटल. कोई बिजनेसमैन तुम छोड़, तुमसे आज हम 500 रुपया ले, बोले कि 10 साल बाद आके हमसे 500 ले लेंगे, तुम कभी मानोगे इस चीज को? तुम लोगों कहने की अरे सर आज रिचार्ज कराना है, आज रेंट देना है, 500 ही रेंट है मेरे, उसका कुछ भी करके यू विल टेक इट. सो बेसिकली इट वाज कि आइदर टेक दिस मनी और गेट लॉस्ट. ही चैलेंज इट, ये कंपनसेशन ठीक नहीं. ठीक है. नाउ द फर्स्ट वाज कि व्हाई डिड यू गेट थ्रू आर्टिकल 123. और टाइमिंग देखो कि दिस ordinance was signed on 19th of July or House Lok Sabha was to meet on 21st of July. 19th of July को ordinance sign होता है और लोक सभा जो है वो 21st of July को मिलने वाली. क्या इसको हम urgent requirement कह सकते थे? जब इंडिया इतने दिनों से गरीब था तो 2 दिन और गरीब रह सकता है कि नहीं? आर्टिकल 123 क्या कहता है? आर्टिकल 123 says that when there's an immediate action is required. तो ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन और हम गरीब नहीं रह सकते? ठीक है, हमें तो आदत है, हम तो रह ही सकते हैं. उसका रीजन क्या था? उसका भी रीजन पॉलिटिक्स में था. इफ यू सी दिस टाइमिंग दैट जाकिर हुसैन ही डाइड इन ऑफिस, वीवी गिरी ही बिकेम द प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट. इनका लास्ट वर्किंग डे था 20 जुलाई को, बिकॉज ही वाज टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंशियल. और वीवी गिरी आदमी किसके थे? इंदिरा गांधी की. इनफैक्ट ये जीते ही थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. व्हाई? बिकॉज ही वाज बीइंग सपोर्टेड बाय इंदिरा गांधी. दैट मींस द पार्टी, कांग्रेस पार्टी इज सपोर्टिंग नीलम संजीवा रेड्डी, और इनको कोई पार्टी नहीं सपोर्ट कर रही है. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी. व्हाट इंदिरा गांधी जस्ट सेड, शी रोट अ लेटर टू द एमपीज ऑफ द कांग्रेस. शी रोट अ लेटर कि लंबा लेटर था, उसके लास्ट में यही कंक्लूजन था कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट कीजिए. लिसन टू द कॉन्शियंस एंड देन वोट. लोग समझ गए कि अंतरात्मा की आवाज क्या है. एंड पीपल वोटेड फॉर वीवी गिरी. इमेजिन, कोई इंडिपेंडेंट पंचायत नहीं जीत पाता है और वो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए. दिस इज हाउ इंदिरा गांधी स्टार्टेड कमिंग टू बिकमिंग दैट पावर. नाउ ही इज गोइंग टू नो 20 जुलाई को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है. देन मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हु वाज द चीफ जस्टिस देन, ही विल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट. क्या पता ये इंसान बोल दे कि उस समय जुडिशरी नेक्स्ट लेवल पे चल रही थी, क्या पता बोल दे कि मैं साइन ही नहीं करूंगा.
और इसलिए उन्होंने 19 जुलाई को ही साइन करा दिया। बट एनीवे 21 जुलाई को व्हेन द हाउस मेट दिस वाज पास, तो इसलिए कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं। चैलेंज किया गया दैट इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। व्हाई? बिकॉज व्हाई ओनली 14 बैंक्स? या तो आप सारे बैंक को नेशनलाइज कर दो, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव सेलेक्टेड दीस 14? सो इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14। सेकेंडली, तो वो उसका सुप्रीम कोर्ट बताएगा, मैं बता रहा हूं कि इनके आर्गुमेंट्स क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के आर्गुमेंट्स अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है इट इज वायलेटिंग। सेकेंड, इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 19। अब 19 में भी दो क्लॉजेस को ये वायलेट कर रहा है। इट इज वायलेटिंग 19(1)(f), the right to acquire, hold and dispose of the property, and it is violating 19(1)(g). 19(1)(g) says that every Indian has the freedom to do whatever profession they want. Here somebody has selected to be in banking, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? बैंक को नेशनलाइज कर रही है। दैट मीन्स इट इज वायलेटिंग 19(1)(g, and it is also violating article 31। ये चार्जेस आरसी कूपर ने लगाए। इनके भी वकील कौन थे? नानी पालकीवाला। स्टेट जो है, स्टेट के वकील चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक प्लान है। प्लान ये है कि भाई फंडामेंटल राइट्स तो लोगों के होते हैं ना, बैंक्स के थोड़ी होते हैं। तो इनको बोलने तो जितना बोल रहे हैं, लास्ट में हम यही आर्गुमेंट देंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ पीपल, दे आर नॉट ऑफ बैंक्स, एंड हियर यू आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स, एक्शन इज ऑन बैंक्स, और इसी पे पूरा जो है मामला पलट जाएगा। एंड दे ब्रॉट दिस आर्गुमेंट दैट फंडामेंटल राइट्स आर फॉर पीपल नॉट फॉर बैंक्स। बट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफेक्ट टेस्ट, एक वर्ड आता है इफेक्ट टेस्ट, दैट मीन्स द एक्शन, यदि उसका इफेक्ट ये होता है कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, then it will be considered as the violation of fundamental rights. So no doubt here government is nationalizing banks, but उसका effect क्या हो रहा है? That those who are holding the stakes into that, their fundamental rights are getting impacted. So therefore these arguments will be valid. Coming to this article 14, of course it is not absolute right, for that matter almost no fundamental right is absolute. Article 17 एक exception है, but Supreme Court said yes, it is violating article 14. Article 14 ये violate कर रहा है। Article 19(1)(g) को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा it is not violating. Article 19(1)(g), that means freedom to do whatever profession is not being violated because state has the power to create monopoly. State has the power to create monopoly. मतलब ऐसा नहीं है कि विदाउट लाइसेंस आप कल को बैठ के शराब बेचने लग जाएंगे, वो स्टेट रेगुलेट करेगी। ऐसा नहीं है कि कल को आप कुछ केमिकल बना के बेचने लगे, दैट स्टेट कैन रेगुलेट एंड मोनोपोलाइज। आप देखेंगे कि ओनली दोज पीपल हु गेट द लाइसेंस दे कैन ओपन द पेट्रोल पंप। ऐसा नहीं है ना कि कल को आप जमीन का खुदाई करके खुद पेट्रोल निकाल के बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्टेट कैन मोनोपोलाइज थिंग्स, तो इट डज नॉट स्टैंड। प्लस ये कंपनसेशन, इट इज गोइंग अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ आरसी कूपर। इट वाज 11 जज बेंच, 10:1 का फैसला था। 10 जजेस रूल्ड इन फेवर ऑफ द आरसी कूपर। अगेन इंदिरा गांधी लॉस्ट, तो इसका ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, राइट राइट। In this case, the Supreme Court ruled in favor of R.C. Cooper, and acknowledged that government's action violated Article 14 and Article 31. अब यहाँ पे इंदिरा गांधी का क्या आर्ग्यूमेंट था स्टेट का? इंदिरा गांधी had argued that we are following 39B and C. That means this money in the bank is a material resource. We are going to use it for common good. 39C, redistribution of wealth we are going to do. But court favored fundamental rights over DPSP. So right now we are in a phase when FR is more important than the directive principle. इसके बाद जो केस एक हुआ important, ठीक है, that is the केस का नाम तो इतना बड़ा है, इतना याद नहीं रहेगा। His Highness महाराजा धीराज माधवराव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर
ठीक है, तो ये तो याद रहने से रहा। ठीक है, तो जस्ट राइट प्रीवी पर्स केस, प्रीवी पर्स केस याद रह सकता है तो लिख लो, वर्ड लिमिट भी तो देखना है। नाउ व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो the princely states, they were not becoming ready to come into the Union of India, because under Britishers they were under arrangement कि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप हमें इतना पैसा दे दो, बाकी आपको जितना टैक्स करना है वो करो। नाउ दैट अपॉर्चुनिटी विल बी लॉस्ट। अब ऐसा तो नहीं होगा ना यूनियन ऑफ इंडिया में आप अपना टैक्स लगाएंगे नहीं, वो तो पार्लियामेंट ही लगा सकते। एंड देयरफॉर दे वर हेजिटेटिंग, दे वर जस्ट वेइंग देयर ऑप्शन कि क्या हम पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, इंडिया के साथ जा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट रहने का भी मन था। एंड देयरफॉर वीपी मेनन एंड सरदार पटेल, दे एश्योर्ड दैट वी विल बी कंपनसेटिंग यू। ठीक है, अब कोई रॉयल फैमिली से है तो रॉयल फैमिली के लोग काम थोड़ी करेंगे। ठीक है, उनको तो पैसे चाहिए। फ्रॉम वेयर विल यू गेट? द गवर्नमेंट विल कंपनसेट। इनफैक्ट व्हेन यू विल विजिट लखनऊ में एक म्यूजियम है, फोटो म्यूजियम, जिसमें लखनऊ के जितने नवाब रहे हैं उनका पोर्ट्रेट है, लाइफ साइज पोर्ट्रेट है, इमामबाड़ा के पास। ठीक है, सो व्हेन यू विल गो देयर ना, द गाइड एक्सप्लेन्स, उसमें एक नवाब के बारे में वो बताता है कि ये जो नवाब हैं, और बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स हैं, मतलब सो गुड दैट लाइवली, मतलब उसमें ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। इफ इट इज ऑन वन कॉर्नर, इफ यू आर वॉकिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर, यू विल, ऐसा लगता है कि द नवाब्स आईज दे आर फॉलोइंग यू। ऑप्टिकल इल्यूजन है, बहुत सुंदर। तो एक नवाब के बारे में वो बताता है कि जब अंग्रेजों ने हमला किया और जब घुसे इनके किला में, इन द फोर्ट, महल में घुसे, तो सभी लोग भाग गए। ठीक है, लेकिन जब नवाब साहब के चेंबर में घुसे तो नवाब साहब बैठे थे गद्दी पे अपने। अंग्रेजों को सरप्राइज हुआ, ये तो बहुत वीर आदमी है। तो अंग्रेजों ने पूछा कि आपको डर नहीं लगा, सभी भाग गए, आप नहीं भागे? तो नवाब साहब ने कहा कि हमें जूती पहनाने वाला कोई नहीं था। नवाब है तो खुद से जूती थोड़ी पहने। तो अंग्रेजों ने जूते पहनाए और अरेस्ट करके ले गए। ठीक है, तो अब प्रिंसली स्टेट्स हैं। हाँ, किसी ने लिखा भी है नवाब वाजिद अली शाह, बिल्कुल सही, ये। तो अब कोई प्रिंसली स्टेट्स हैं तो वो काम थोड़ी करेंगे, तुम लोग की तरफ फॉर्म थोड़ी भरेंगे, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि विल कंपनसेट। दिस कंपनसेशन वाज एज लो एज 5,000 टिल 10 lakhs। ठीक है, टिल 10 lakhs, मतलब ये 1947 में 10 लाख की गारंटी दी जा रही है, जबकि मान के चलो कि 1983 में एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी 2300 रुपए होती थी, 1983 में। ठीक है, 1983 में एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी 2300 रुपए है, और 1947 में 10 लाख रुपए, एंड इट वाज अनचार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वोटिंग नहीं होगी उस पर, टैक्स फ्री। सो इट वाज अ वेरी बिग अमाउंट। ना इंदिरा गांधी का अगला टारगेट ये हुआ, क्योंकि समहाउ भारत में जब अमीरों को चोट पहुंचाओगे ना तो गरीब खुश होते हैं। आप भी अभी जाएंगे, न्यूज में मिलेगा कि ये बिजनेसमैन अरेस्ट हो गया, या आपको सुकून मिलता है कुछ अंदर से। ऐसा नहीं हुआ कि उसका पैसा आपके पास आने वाला, कभी नहीं आएगा, बट सुन के अच्छा लगता है चलो ये अरेस्ट हुआ। ठीक है, सैडिस्टिक प्लेजर्स हम लेते हैं। एंड इंदिरा गांधी न्यू दिस वेरी वेल कि यदि अमीरों को परेशान करेंगे तो गरीबों को लगेगा कि हमारे लिए ही तो करें। नेक्स्ट टारगेट वाज प्रीवी पर्स। शी सेड दैट इट विल बी रिमूव्ड, it could not be passed in Rajya Sabha. It was passed in Lok Sabha, but Rajya Sabha में because of one vote it could not be passed. क्योंकि राज्य सभा में प्रिंसेस का जो रूलर्स का प्रभाव अधिक था, they could convince the regional parties not to vote in favor. She brought a presidential notification और उससे उन्होंने हटा दिया। It was immediately challenged in the court, and here also court ruled in favor of the princely states. So here also Indira Gandhi lost this particular case. ठीक है, इसको बस एक लाइन का ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। In this case, government's decision to remove the privy purse
was challenged, and the Supreme Court ruled in favor of the princely states. In fact, if you will visit Jodhpur, तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर किंग के बारे में दे टेल कि राजस्थान का ट्रेडिशन है ना, जो रानियां होती थी, द फेस वाज नॉट रिवील्ड, देयर ऑलवेज यूज्ड टू बी पर्दा एंड ऑल. So once she went to London, and the English press was very much interested in with royal life of India and all they used to. उसमें से somehow when she was deboarding, a reporter was able to click her photo in which the face was revealed, and it got printed in the newspaper headlines. उसमें the king came to know about it, and immediately, of course, वो तो publish हो चुका है, and they will not be even if you say, they will not be changing their decision. And then he orders that whatever money it takes, each and every copy of that newspaper next day was bought by Maharaja. सारा हम ही कॉपी खरीद लेंगे, तो इंटरनेट तो था नहीं कि ऑनलाइन में चला जाएगा. ठीक है, ईच एंड एवरी कॉपी वाज बॉट जस्ट बिकॉज महारानीज फेस शुड नॉट बी रिवील्ड आउट इन द ओपन. सो अगेन द थिंग इज कि इफ यू सी द लाइफ truly king size it used to. Anyway, now it was abolished. अभी आगे देखेंगे 26 amendment आएगा, उसमें हट जाएगा. It was clearly a breach of promise. Which one? This was a breach of promise, but again, see, there was a case, the judgment of which came in 1994, which is called the Ganpat Rao case, 1994. Supreme Court said that in the constitutional age, you cannot have privileges. It was breach of promise, ठीक है, कह सकते हैं. But you think कि somebody is getting that amount, 10 लाख तब का मान के चलो कि 100 करोड़ के आसपास सभी का हो जाएगा. ठीक है, कि somebody is getting that money just because of the accident of birth. You are just born in that family, government is taking tax from the poor and giving it to you. तो किसी भी डेमोक्रेसी में राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस नहीं होते. ठीक है, अब a businessman जैसे मुकेश अंबानी earning and his property going to the son, वो different है, he has hard works he has done. But just because कि आप उस फैमिली में पैदा ले लिए and just you are getting this money, और money ऐसा थोड़ी, it is being printed just like that, it is poor's money. So that's why Supreme Court in 1994 said that we will not be, this is something which cannot be allowed, because in a democracy rights exist, not the privileges. ठीक है, चलो. So 1970 का केस है. Now is the time when Indira Gandhi understand that the iron is hot. Now is the time that you can play your politics. And she started campaigning in that manner. She directly appealed to the people that I say गरीबी हटाओ, opposition say इंदिरा हटाओ, आप किसका साथ देंगे? लोगों ने कहा of course गरीबी हटाओ. ठीक है. So she said कि I am trying my best, but what can I do when I try, the party is not supporting, because 1969 में कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, एंड द कामराज ग्रुप वाज कॉल्ड एज द ओरिजिनल कांग्रेस, उसको ओरिजिनल कांग्रेस माना गया. सो शी सेज दैट इफ आई एम ट्राइंग टू डू, माय पार्टी इज नॉट सपोर्टिंग. Before, if I am trying to do, my cabinet is not supporting. She is having people like Morarji Desai as the finance minister, who is a liberal person. Okay, he will not support such socialist ideas. When I'm trying, then the parliament is not supporting. When I'm trying, the judiciary is not supporting. अब हम क्या करें? If you want this to be possible, then give me such numbers, support me in such a manner that I should not face any of these bottlenecks. बैकड्रॉप ये था 1970s के आसपास यूएस में एक प्रेसिडेंट हुए रिचर्ड निक्सन, अ रिपब्लिकन, एंड लाइक ऑल रिपब्लिकन्स ये भी पागल था. अभी वाला जो है ना, ऐसा ही. इनफैक्ट रिचर्ड निक्सन के बारे में एक मैडमैन थ्योरी कही जाती है. मैडमैन थ्योरी मींस कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद, रिचर्ड निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन खुद रिचर्ड निक्सन के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाता था कि ही इज अ मैडमैन, ही इज नॉट रैशनल. व्हाई? बिकॉज ये कोल्ड वॉर का टाइम है और अमेरिका ने एक बार न्यूक्लियर बम यूज कर दिया है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज स्प्रेडिंग दिस न्यूरल दैट दिस पर्सन इज अ मैड पर्सन. ये अगली बार भी न्यूक्लियर कभी भी चला सकता है.
So better keep him in better humor. जो काम अभी ट्रम्प इतनी अच्छी से कर रहा है, do you think that he's a mad person? No, he's such a rational person. He's a successful businessman. बट कभी भी कुछ भी बोल देता है. कभी बोलता है नोबेल प्राइज हमको मिलना चाहिए, अगले दिन हमला कर देता है. कभी बोलता है कि इंडिया पाकिस्तान में हम ही ने सब ठीक करवाया. कभी बोलता है मोदी इज अ फ्रेंड, कभी बोलता है मोदी इज नॉट अ फ्रेंड. कभी भी कुछ भी बोलता है. Why? Because he wants that world should not be able to predict him कि what is going to be step number 2. और किसी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रियल पॉलिटिक्स में, बेस्ट थिंग इज नॉट टू बी प्रेडिक्टेबल. द मोमेंट यू आर प्रेडिक्टेबल, यू आर गॉन. सो मैडमैन थियरी स्प्रेड की गई, ठीक है. एंड देयर वर रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दैट ही इज थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इन इंडिया. ही वाज नॉट हैप्पी विद द सोशलिस्ट पॉलिसीज दैट मिसेस गांधी वाज इम्प्लीमेंटिंग. कोल्ड वॉर का टाइम है. कैपिटलिज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यूएस रिप्रेजेंट कर रहा है. और इंडिया में ये सोशलिस्ट पॉलिसीज अपना रही. And there were intelligence reports that maybe the CIA will instigate some kind of revolt against Mrs. Gandhi. And therefore Mrs. Gandhi knew कि time बहुत कम है हमारे पास. 1967 में last elections हुए थे. Upcoming election was supposed to be 1972, but Indira Gandhi preponed the elections. She called for elections in 1971. उन्होंने वीवी गिरी को इस्तीफा भेजा. वीवी गिरी अपने आदमी थे, उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्यों. और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कैन देयर बी अनदर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और नॉट. This is the time when presidents get the discretionary opportunity that they can explore that whether other government can be formed or not. तो कायदे से जब उन्होंने इस्तीफा दिया and she said कि dissolve the government, the president should have explored into the other options, but he did not. ठीक है. And then elections were called, and it was the first election in India and probably the only election when the constitution was the talking point in the election. क्योंकि अब जाके constitution is being seen as a part of problem, not the part of solution. Because Mrs. Gandhi is projecting that I want to bring the socialist policies, but the constitution has fundamental right to property. I cannot do anything. So constitution is being seen as a part of problem. And this is also one of the criticism that how just in 20 years, 1950 to 1970, the entire narrative was built that constitution is the part of the problem. Each party in its manifesto is writing that if we come to power, हम constitution को ऐसे amend करेंगे, हम constitution को ऐसे amend करेंगे. So if you see the campaign around that particular time, then the campaign is अभी चुनाव क्यों? She explained, बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बढ़ाती है. मारुति बनाते थे ना वो, ठीक है. Back then Congress had this symbol as the election symbol, ठीक है. ए गोपालन ने कहा कि छोड़ो कॉन्स्टिट्यूशन, बंदूक उठाओ, ठीक है. कोई कॉन्स्टिट्यूशन, सब बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, ये बोले कॉन्स्टिट्यूशन हटाओ, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ठीक है. कम्युनिस्ट थे ना, कम्युनिस्ट तो रेवोल्यूशन की बात करेगा, वायलेंट रेवोल्यूशन की, ठीक है. इलेक्शंस हैपेंड. इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया, ठीक है, दिस वाज द रिजल्ट. 352 सीट्स इंदिरा गांधीज कांग्रेस गॉट, 16 सीट्स कामराज कांग्रेस. लोगों को पता चल गया ओरिजिनल कांग्रेस कौन है. ओरिजिनल बोलने से थोड़ी हो. People have accepted. The biggest party in opposition was the Communist Party with just 25 seats. 1971. You can imagine that when 1971 results is coming purely on the basis of Indira Gandhi. 352 versus almost nothing. ठीक है. यहां से फिर इंदिरा गांधी का तांडव स्टार्ट होगा. अभी तक गूंगी गुड़िया हो गया फेस, ठीक है. अब इस वेब सीरीज में अगला टॉपिक आएगा जो कि इंदिरा गांधी एज द आयरन लेडी. शी शोज टू द वर्ल्ड कि व्हाट इट मींस. इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए एंड नाउ शी इज टेकिंग वेरी क्लियर डिसीजंस. शी इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम एनीथिंग. शी साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर. रिचर्ड निक्सन को भी इलेक्शन का रिजल्ट देख के पता चल गया कि व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी शी इज एंजॉयिंग. And forget about socialist policies. Clearly, she moved towards the USSR Treaty of Friendship. She wanted to take India into the Bangladesh war. Around this time, result आया था March, April में. She wanted to take India into this war. Operation Searchlight चल रहा था, ठीक है. People, refugees were coming in, and she wanted to attack Bangladesh, मतलब attack Pakistan and. But General Manekshaw, he opposed. He said that if India enters into this war,
this point of time, that means May, July, June, I can guarantee a defeat, because in monsoon Brahmaputra becomes ocean. It becomes ocean. तो possible ही नहीं है कि north east में हम लड़ पाए. She waited, she listened. That's why there is a very famous statement from Manik Shah that a yes man is a dangerous man. A yes man is a dangerous man. If the bureaucrat, and this is also, you can quote it in your ethics paper and all, that if a bureaucrat is always saying yes, he's a dangerous man. He will plunge country into such a big problem. Bureaucrats are supposed to give right decision. इसी secretaries को क्यों कहा? Why the secretaries? Because they are there to suggest you. Leader तो कुछ भी कहे, leader कहेगा ये नहीं ये करो. But again, he will tell what is right. And India entered the war on 3rd December 1971, and within flat 13 days, 16 December को भी divided Pakistan. भारत में लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी कि बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है. हाँ, इफेक्टिवली हमने एक नए देश को जन्म दिया. इमेजिन हर पॉपुलैरिटी. मैंने बताया था कि यदि कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके इतना पॉपुलर हो सकता है, तो यहाँ तो देश के 2 टुकड़े ही कर दिए, है ना. इमेजिन दिस. देन शी इज टेकिंग एंड मेकिंग इंडिया न्यूक्लियर. 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हैपेंड. ये सब चल रहा था. उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ भाई, संविधान लाओ, संविधान लाओ. संविधान लाया गया और बताया गया कि प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ. प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम गोलकनाथ केस 1967. नेक्स्ट, बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970. नेक्स्ट, प्रीवी पर्स केस 1970. She brought 24th amendment to overrule this judgment. She brought 25th amendment to overrule this judgment. She brought 26th amendment to overrule this judgment. और उसके बाद एक सिलसिला स्टार्ट हुआ ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसको लिखेंगे, राइट. रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट, रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट. इसमें फर्स्ट पॉइंट, राइट, 24th अमेंडमेंट 1971. 24th Amendment 1971. याद करो गोलकनाथ में क्या कहा गया था. It was said that Article 368 does not give the power, rather it just tells the procedure to amend the constitution. और बाकी चीज जो कहा गया था उसका क्रक्स ये था कि when the constitution is being amended under Article 368, it can be reviewed through the power of judicial review under Article 30. This was the crux of it. She wrote exactly opposite of this thing. Changes were made. क्या change किया गया 24th amendment से? Article 13 उठाया गया. Now we have seen that originally Article 13 had 3 clauses. Clause 1 of the law before the commencement. Clause 2, future laws. Clause 3 giving the definition of law. She added clause 4 और उसमें लिखा गया that if any amendment is being done through Article 368, then Article 13 shall not apply on that. Golaknath ka completely opposite. Exactly same thing was said in 368 also. Article 368 originally had 2 clauses, clause 1 and 2. Now she added a third clause where exactly the same thing was said, that if any amendment is being done under 368, it cannot be challenged under Article 13. फिर दिमाग में ये आया कि what if president साइन करने से मना कर दे. हो सकता है ना कि बोथ द हाउसेज के पास प्रेसिडेंट बोल रहा है कि हम साइन ही नहीं करेंगे. ठीक है, पहले से ऊपर उठा ले रहा, मत कर, नहीं करेंगे, क्योंकि नीलम संजीवा रेड्डी आगे बनने वाले थे. मतलब इट्स नॉट दैट, बट इन द फ्यूचर. सो शी 368 क्लॉज 2 में उन्होंने अमेंडमेंट किया और लिखा दैट प्रेसिडेंट शैल गिव हिज एसेंट व्हेन इट कम्स टू अमेंडमेंट. एंड आर्टिकल 368 का जो टाइटल है, हेडिंग है, वहां पे अमेंड करके लिखाया पावर एंड procedure to amend the constitution. So if you see
आर्टिकल 13 1 2 3 पहले से था, क्लॉज 4 was added later on, है ना. क्लॉज 4 इसमें क्या लिखा है? Nothing in this article shall apply to any amendment made under this article 368. So article 13 will not apply to 368. Exactly same thing was said in 368 clause 3. Nothing in article 13 shall apply to you. Exactly same चीज दो बार कहा जा रहा है. ठीक है. 368 clause 2 was amended, और यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब amended है. Who shall give his assent? And the title of 368 was amended. Initially it was just procedure, now it is power and procedure to amend the constitution. तो इस ऑब्जर्वेशन को लिख देंगे, जस्ट पॉइंट वाइज लिखेंगे इसमें. फर्स्ट राइट, आर्टिकल 13 24th अमेंडमेंट, इसी का पहला पॉइंट. इसका पहला पॉइंट, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 and 368 clause 3 and 368 clause 3 were added to provide that constitutional amendments cannot be reviewed under article 13. Next point, article 368 clause 2 provided that the president shall give assent to the amendment bill Next point, right. The title of article 368 was amended to include the words power and procedure. यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, this was done to overrule the Golaknath verdict. Next, give us a heading, the action of the government में 25th Amendment 1971. 25th Amendment 1971. एक लाइन लिखेंगे, this was in response to the R.C. Cooper judgment. ठीक है. Now remember R.C. Cooper में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट said that if you are bringing a law, ठीक है, the essence of the Supreme Court judgment was that a law which is giving effect to 39B and C but violating Article 14, 19 and 31, then this law has to be declared invalid. अब इंदिरा गांधी ने यहां पे क्या किया? इंदिरा गांधी added a new article, Article 31C. 31A and 31B was added by Nehru through the First Amendment. Now Indira Gandhi is adding 31C through 25th Amendment. And this article
said that if there is any law which is giving effect to 39B and C, it cannot be challenged under Article 13 for violating 14, 19 and 30. Exactly opposite of what R.C. Cooper said. R.C. Cooper में इंदिरा गांधी के ये आर्ग्यूमेंट्स थे, R.C. Cooper के ये आर्ग्यूमेंट्स थे. कोर्ट ने कहा दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. Now Indira Gandhi is adding a new Article 31C and saying that if the government is bringing a law giving effect to 39B and C, it cannot be challenged in the court with Article 13 for violating 14, 19 and 31. But ये तो कम डेंजरस पार्ट था. जो अधिक डेंजरस पार्ट था 31C का, that was the next part of 31C. वो ये था that if a law is coming जिसके डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ है that it is giving effect to 39B and C, it cannot be challenged for not giving effect to 39B and C. समझ आया? नहीं ना, ऐसे भी 7:30 होने वाला है. ठीक है. हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था. कॉम्प्लेक्स क्या था? सिंपल ही था. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा. अब एक बार उसको मैं फिर से रिपीट करता हूं. दैट इफ देयर इज अ लॉ जिसके डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है दैट इट इज गिविंग इफेक्ट टू 39B and C, कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट फॉर नॉट गिविंग इफेक्ट टू 39B and C. पहले देखते हैं 31C एक्चुअली दिखता कैसा है. सो दिस इज 31C. 31C फर्स्ट पार्ट, दैट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग. मैंने बताया था कि नॉट विथस्टैंडिंग जिस आर्टिकल के सामने लग जाए, इट इज अ वेरी पावरफुल आर्टिकल. ठीक है, a very very powerful article. Notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to the policy of state towards securing all the principles laid in. अभी फिलहाल में ये पार्ट 4 है, पहले ये 39B and C था. तो अभी इसको it was changed through 42nd amendment, इसको 39B and C ही पढ़ेंगे. So any law which is giving effect to 39B and C cannot be challenged under Article 13 for violating Article 14, 19 और उस समय यहाँ पे 31 भी. This is the first part I said. Second part जो इसमें है, and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy. Such policy means 39B and C shall be called into question in any court on the ground that it does not give effect to such policy. इसको एक एक्सट्रीम एग्जांपल से समझो, एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और उस लॉ के डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है दैट इट इज गिविंग इफेक्ट टू 39B and C. आपको डिक्लेरेशन पढ़ के अच्छा लगा क्योंकि आपको यू आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होगी, मटीरियल रिसोर्स फॉर द कॉमन गुड. यू आर एक्सपेक्टिंग सम वेलफेयर एक्टिविटीज फ्रॉम द स्टेट. जैसे ही आपने अगली लाइन पढ़ी उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रीलिम्स फेल हुआ उसको जेल में डालेंगे. एब्सोल्युटली अलग. आपको क्या लगा कि यार डिक्लेरेशन में कुछ और लिखा हुआ है, यहां पे कुछ और लिखा हुआ है. दैट मींस द लॉ इज नॉट गिविंग इफेक्ट टू व्हाट इज रिटन इन डिक्लेरेशन. ऑब्वियसली योर नेक्स्ट मूव विल बी यू वांट टू गो टू द कोर्ट, बट लॉ कहता है यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट. यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट. फिर से इसको पढ़ो. And no law containing a declaration that it is giving effect to 39B and C can be called into question in any court for not giving effect to 39B and C. Nani Palkiwala said कि just this part of 31C can make Indian government an authoritarian government. क्योंकि कानून आप कुछ भी लाओ, केवल डिक्लेरेशन में लिख दो that it is giving effect to 39B and C. You bring anything and you will not be able to challenge. Basically जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं. बस आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन में लिख देना है दैट इट इज गिविंग इफेक्ट टू 39B. बाल मेन बॉडी में आप कुछ भी लिखो. और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये भी कितना डेंजरस हो सकता है इसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं. इमेजिन अ सिचुएशन, जो प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में, न्यूज़पेपर्स पब्लिश होता है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक. प्रिंटिंग प्रेस कैन बी अ मटीरियल रिसोर्स. गवर्नमेंट ने कहा कि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू बाय अ न्यूज़पेपर.
हिंदू 10-11 रुपए का आता होगा, इंडियन एक्सप्रेस 10-11 रुपए का आता होगा. Not everybody is able to buy a newspaper. So what we will do for the common good, we will acquire all the printing press, jitne bhi media house hai, and we will publish the newspaper and we will give it for free to everybody. यानी हम material resource acquire कर रहे हैं and it is being used for common good है ना. But इस action से Article 19 violate होगा ना, because Article 19 is freedom of speech and expression. It is getting violated. But you cannot go to the court. Why? Because it is saying that if there is any law which is giving effect to 39B and C, you cannot challenge it under Article 13 for violating 14, 19 and 31. And the second part, हमने देखा ही how dangerous it is. That's why you'll find that this part was declared invalid in Kesavananda Bharati case. Kesavananda Bharati case, because it could have turned Indian state as a totalitarian state. ठीक है, इसको लिखेंगे, right? Right. Article 31C was inserted. 31C was inserted. नेहरू जी ने 31A और B लगाया. जहां से भी देख रहे होंगे 31C को सोच रहे होंगे कि मतलब क्या ही है? Right. Article 31C was inserted to provide इसके भी first sub point करो, first sub point, to provide that any law, yes, it was 25th Amendment, any law giving effect to 39B and C, 39B and C cannot be challenged for violating fundamental rights under Article 14, 19 and 31. Second subpoint, any law declaring that it is giving effect to 39B and C, cannot be challenged for not giving effect to 39B and C. एक पैराग्राफ यहां पे लिखेंगे, नानी पालकी वाला called this part as the forerunner of a totalitarian state. Third right, 26th Amendment. 26th Amendment, 1971. Right? This was in reaction to the Privy Purses case. अब इसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया, that Article 291 which provided for the Privy Purse, it was omitted. You will find it was omitted through 26th Amendment. Article 362, it provided for the rights and privileges of the rulers.
It was omitted through 26th amendment. और उन्होंने द डेफिनेशन ऑफ रूलर को चेंज कर दिया. आर्टिकल 366 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, इट इज द आर्टिकल ऑफ डेफिनेशंस. जितने डेफिनेशंस वहीं पे दिए हुए हैं, ठीक है, एससीज एसटीज जितना भी डेफिनेशन है वहीं पे दे रखा है. सो डेफिनेशन ऑफ द रूलर वाज चेंज और उसको टाइम से बाइंड कर दिया. उन्होंने कहा रूलर का मतलब ये है बिफोर द 26th अमेंडमेंट. रूलर्स मींस दिस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 26th अमेंडमेंट. यानी 26th अमेंडमेंट के बाद कोई रूलर ही नहीं है. और यदि कोई रूलर ही नहीं है तो ऑफ कोर्स देयर विल नॉट बी एनी प्रिवी पर्स. And she also added one of the articles, 363A, in which it was explicitly said that privy purse will not remain. This amendment was challenged in a very famous case, Raghunath Rao Ganpat Rao, in which the Supreme Court said that in a democracy, rights exist, not privileges. So in any egalitarian society, nobody should be getting money from the state because of the accident of birth. हाँ, इफ एट ऑल स्टेट हैज टू हेल्प, वो मार्जिनलाइज्ड को हेल्प करेगा ना. बट ऐसा थोड़ी है कि आप ऑलरेडी यू आर इन अ रॉयल फैमिली और स्टेट से भी आपको करोड़ों रुपए मिल रहा है. इट डज नॉट, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन द करंट सेटअप. तो इस ऑब्जर्वेशन को लिख देंगे. राइट राइट. आर्टिकल 291 एंड 362 Article 291 and 362 were omitted. Full stop. The definition of ruler. Second point लिख सकते हो. The definition of ruler in Article 366 Clause 22 was made relevant only till the commencement of 26th Amendment. Next point. Article 363 Clause A, capital A. Article 363, not clause, 363A explicitly abolished the Privy Purse, write a paragraph. In 1994, in 1994, the Supreme Court upheld the 26th Amendment, in Raghunath Rao Ganpat Rao case. In Raghunath Rao Ganpat Rao case, he was also the ruler of one of the princely states. Raghunath Rao Ganpat Rao case, declaring that in an egalitarian society, citizens enjoy rights and not privileges.